Good evening, everyone. Thank you, Club NPC, for having me here. And it's really good to be with the vision which the President has talked about, how the community, as a construction community, we can come together and we help each other and not just ourselves and also like people around us. I think as the people, like in the construction itself, when we talk about it's always like we are serving our clients, we are serving our customers. It's always the service is there, but just that we can extend it not just for our customers, but to beyond all the people. And I really appreciate the vision of the president. So with this, I think, so we talk about, can we mix Hindi into it so that we can have, okay. तो आज हम बात करते हैं आर्किटेक्चर रेजोनेंस. आर्किटेक्चर रेजोनेंस होता क्या है? सो रेजोनेंस वो है जो हम यहाँ कर रहे हैं. रेजोनेंस वो है जब इतने सारे लोग अलग अलग कम्युनिटी से एक ही जगह पर नॉलेज शेयरिंग के लिए आए. तो एक रेजोनेंस है where we can share each other experience and bring in. So here I would want to run you through like how our practice, what kind of challenges we've faced, how we could overcome those challenges with help of each other or the different people in the community, and how could we like bring a sort of resonance what we understand it is. So what, as a practice, what we look at is like, we say like space could always be more than what it is. So that's why we start with the motto is like space is more. Space could be geometry, it could be experience, it could be several other things. So as a community, we are all associated with this part in some way or the other. कहीं ना कहीं से हम इस चीज़ से जुड़े हैं जिससे हम कहते हैं बिल्डिंग, जिससे कि हमारी जिससे हम एक अपनी इंडस्ट्री डिफाइन करते हैं, जिससे हम हर चीज़ डिफाइन करते हैं. पर क्या ये बिल्डिंग अकेले में एग्जिस्ट करती है? नो. इफ यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो इट हैज़ अ साइट अराउंड इट. इट हैज़ अ साइट वेयर इट हैज़ टू बिलोंग. इट हैज़ अ साइट जहाँ पर उसको करते हैं. बट क्या ये अकेला बिल्डिंग और साइट ही सब कुछ है? इफ़ यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी सी दैट वी हैव अ कम्युनिटी अराउंड इट. Okay. So we talk about like we have a community around it. And so when we talk about we have a site, we have a building, we have a community, what happens after that? Okay, it's about economy, because everything, whatever the community has to live in and whatever is supposed to happen, it happens around what we call like which works around whatever we serve, builds into that particular economy, and that's how we serve it. And what happens after that? We have environment, because we don't live in a space, we live on a planet, and we have to take care of the planet. And that's what we consider like choices that are environmental friendly. So these are different layers. But what happens, the interesting part is the confluence of all those things. इन सब का जो मिलन है, जब हम मिक्सिंग होती है, इसको हम एक रेजोनेंस करते हैं, जहाँ पर हम अलग अलग चीज़ों को जो हम इम्पोर्टेंट समझते हैं, उसका जो फ्रीक्वेंसी जब इकट्ठा होता है, तो इकट्ठा एक रेजोनेंस क्रिएट हो सकता है. सो हमने आर्किटेक्चर में बहुत सारे बड़े बड़े फिलॉसफी सब कुछ सुने. टुडे आई वुड वांट टू tell you like what is our take on what we call as street smart architecture. Street smartness होता क्या है? जब हम कहते हैं हम बचपन से we have been in a community जहाँ पर we weren't having like surplus of resources. We are not a first world country where resources were given to us, or we are not a community जहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी चाहे, जैसे कुछ भी चाहे वो हम कर सकते हैं. हमेशा हम कितनी बार दिन में सुनते हैं कि हाँ ये हम करना तो चाहते हैं, इस चीज़ का बजट नहीं है, क्लाइंट के पास बजट नहीं है, इस चीज़ का बजट नहीं है. सो इट मीन्स दैट बजट वॉज समथिंग दैट वॉज रियली इंपॉर्टेंट हर चीज़ के लिए. सो स्ट्रीट स्मार्टनेस को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं विद द अवेलेबल रिसोर्सेज उस तरफ उस जगह पर. बिकॉज कभी भी हम जब हम स्ट्रीट स्मार्ट उस चीज़ को कहते हैं विद दैट अवेलेबल रिसोर्सेज, कैन वी डू समथिंग विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अस. क्या हम वो चीज़ कर सकते हैं जो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ बस यही होना था, यही हो सकता था, बट क्या हम इससे थोड़ा अलग कर सकते थे? वो चीज़ स्ट्रीट स्मार्टनेस है जिसको हम जो सेलिब्रेट कर सकते हैं, जो सारे पैरामीटर्स हमने इससे पहले देखे. तो ये प्रोजेक्ट करीबन लगभग हमने 12 साल पहले किया था. ये वन ऑफ आवर इनिशियल, जब हमने प्रैक्टिस शुरू किया था, कॉलेज से बाहर आए थे, 2011-12 के करीब हमने प्रोजेक्ट किया था.
तो उस टाइम पे एक पर्टिकुलर चैलेंज था जब हम ये प्रोजेक्ट कर रहे थे। लेफ्ट में जो हम देखते हैं ये बिल्डिंग्स थे उस टाइम पे, वी वर डूइंग अ फैक्ट्री। उस फैक्ट्री में उन्होंने कहा था कि हमें इस बिल्डिंग को कनेक्ट करके इसको एक नया आइडेंटिटी देना है, बहुत एक्साइटिंग है। बट ये आइडेंटिटी कैसे देना है, उसके लिए एक बजट बहुत बड़ा पैरामीटर था। वो कहते हैं कि हमें उसके अंदर उतने ही पैसे लगाने जो सबसे सस्ता जो फसाड हो सकता था, चाहे हम उसके ऊपर कोई भी मटेरियल अब लगा लें, उतना ही हम कर सकते हैं। अब उस चीज़ के साथ एक तो हम ये वो कर सकते थे जो क्लाइंट ने मांगा, जो हमारे से एक्सपेक्टेड था, वो हम कर सकते थे। बट हमें उसको चैलेंज करके, ये साउथ फेसिंग फसाड है जहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं इसके ऊपर जैसे उन्होंने मेरे से मांगा था, मैं कोई सिंपल ग्लास लगा देता, सब कुछ कर देता, तो उससे हम मतलब हम जस्टिस नहीं कर सकते थे हमारी बाकी पैरामीटर्स को। एंड इस पर्टिकुलर ऐसे प्रोजेक्ट्स, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पर हमारे पास टाइम भी एक रिसोर्स है जो हमारे पास अनलिमिटेड होता है, जब हम रिसर्च कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है जहाँ पर हमारे पास उतना भी टाइम नहीं है, रिसर्च भी उतना ही टाइम में करना है, वो भी एक पैरामीटर है जिसको हमें लिमिट करना है। सो उस चीज़ को करने के लिए, सो दिस इज़ इन एन इंडस्ट्रियल एरिया। उस इंडस्ट्रियल एरिया में वी वांटेड टू डू समथिंग कि क्या हम, जिसको कहते हैं अर्बन एक्यूपंक्चर। तो ये एक जो आइडिया जो था, वी वांटेड टू हैव अ कनेक्शन एंड 2 बिल्डिंग्स को हमने कनेक्ट किया। वी वांटेड अ न्यू आइडेंटिटी बिकॉज वो जिस जगह पर था, द एंटायर एरिया वाज एन इंडस्ट्रियल एरिया एंड देयर वाज नथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट इट। कुछ भी ऐसे इंटरेस्टिंग नहीं था वहाँ पर। तो हमें था कि एक अर्बन एक्यूपंक्चर, जब हम किसी जगह पर एक्यूपंक्चर करते हैं, हमें उस पॉइंट पे जो भी मतलब जो लोकलाइज्ड इफेक्ट है, जैसे जब क्रिटिकल पॉइंट्स पे होते हैं, उससे पूरा एक बॉडी को रिलीफ मिलता है। तो उसी तरह अगर अर्बन लेवल पे हम किसी एक पर्टिकुलर जगह पर अगर हम कुछ इंसर्शन करें, ऐसा कुछ करें जो एक एक्यूपंक्चर की तरह काम करे, जिसको देख के 10 बिल्डिंग्स और अच्छी बन सकते हैं, ये थॉट से हमने उस चीज़ को चेंज करने के लिए, ये साउथ फसाड था, हीट रिडक्शन ज़रूरी था, हमने कुछ मैश जैसा इसको यूज़ किया। मैश से बहुत बोरिंग था, हमने उसको प्लेफुल करने के लिए हमने कुछ कॉन्ट्रास्ट जो उस एरिया में नहीं था, उससे येलो कलर पैनल्स को हमने डेवलप किया। पर चैलेंज था ये पैनल्स बनेंगे कैसे। उसके लिए आइडिया ये था कि हमें कॉस्ट कम करने के लिए हमने जो फैक्ट्री के अंदर जो चीज़ बन सकती है, उन्हीं मटेरियल्स के साथ फाइबर को यूज़ करके हमने बनाया। तो येलो कलर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था, बिकॉज वहाँ जब पहली बार गए थे, इतना कुछ वहाँ पर टूटे फूटे चीज़ें थी, तो एक चीयर लेके आता है, तो वो एक आइडिया था, हाउ कैन वी क्रिएट समथिंग विच वॉज वेरी ब्राइट एंड चीयरफुल। सो ये इसका एनाटॉमिक डायग्राम है, जहाँ पर सिंपल बिल्डिंग के ऊपर हमने एलिमेंट्स को ऐड करके, फिर हमने स्क्रीन्स ऐड करके, फिर उसके बाद ये प्लेफुल फसाड किया। इस फसाड को फ्रैगमेंटेड करने का भी बहुत बड़ा रीज़न था। अक्सर जिसको हम कहते हैं ताजमहल इफेक्ट, ताजमहल सुंदर, बहुत सुंदर है, उसके अंदर ताजमहल के ऊपर जो क्रिएशन है उसका एक रोल है, ताजमहल के सामने जो ओपन स्पेस है उसका एक रोल है। जब हम किसी चीज़ को फ्रेम में के लिए हमें एक बहुत बड़ा स्पैन चाहिए होता है। पर आज हम जिस तरीके से बिल्डिंग्स कर रहे हैं, हम सड़कें बहुत छोटी होती जा रही हैं, बिल्डिंग्स बहुत बड़ी होती जा रही हैं, तो वो विजन जो ताजमहल को बनाने के लिए जो मिला था, इतना बड़ा ओपन स्पेस, वो आज हम सोच नहीं सकते हमें मिले। बट इसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, तो हम अपना कोन ऑफ विजन के अंदर जितनी चीज़ें देख सकते हैं, क्या उसको हम श्रिंक कर सकते हैं। यहाँ पर अब ये चीज़ किया हुआ है। इस एलिवेशन को आप बाई पार्ट्स भी देखेंगे तो आपको वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इसको हम रिडक्शन ऑफ कोन ऑफ विजन की बात करते हैं, जहाँ पर हम जितना हम देख सकते हैं उतना पार्ट में वो सुंदर लग सके। बिकॉज जो 400 फुट का फ्रंट को देखने के लिए जितनी जगह मेरे को चाहिए वो है ही नहीं जो मेरे रोड विड्थ, तो मैं अपनी ड्राइंग के ऊपर जितना सुंदर भी करूँगा तो उस चीज़ को मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊँगा। सो ये पैरामीटर्स थे जो कि साइट पे ये सारी चीज़ें बने, इसको हमने बनाया एंड इसको फाइनली हमने इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया। चैलेंजेस बहुत सारे आए हैं, क्लाइंट के बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे, ये कहाँ किया हुआ है, कैसे किया हुआ है, कैसे हो सकता है। पर हमें कहा कि हमने वो चैलेंज के साथ हम बने रहें कि हाँ ही हमें करना है। एंड ओवरऑल उस तरह का अर्बन एनवायरनमेंट में समथिंग आज भी जो लोग उसको एक माइलस्टोन की तरह, एक लैंडमार्क की तरह उस एरिया में इसको मतलब उसको रिलेट करते हैं। एंड वो 10 साल के बाद भी। थैंक्स। ये एक प्रोजेक्ट है जिसको ये बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, 1000-1200 फुट का प्रोजेक्ट है।
इसके अंदर क्या है कि हमने एक चीज़ सोची थी जब हम पहली बार ये द्वाबा पब्लिक स्कूल करके गढ़शंकर में एक जगह पर ये स्कूल है, पारोवाल करके गांव। उस जगह पर मेनली ये कि जब हम एग्जिस्टिंग वॉशरूम्स देखने गए थे, एग्जिस्टिंग वॉशरूम में 3 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स थे। वहाँ पर एग्जॉस्ट फैंस थे पर वो चलते नहीं थे। उसके बाद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि वहाँ पर स्मेल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। एंड एक वॉशरूम को लेके, हमारे जैसे जनरली पब्लिक वॉशरूम को लेके एक हर किसी को कहीं ना कहीं एक वो फोबिया ज़रूर होता है कि वो कैसे होगा। सो दैट वाज समथिंग, मतलब एक चाइल्डहुड में मतलब एक बहुत स्ट्रांगली इम्प्रेग्नेट हो सकता है, खासकर स्कूल जैसी जगहों पर एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। चैलेंज ये है बिकॉज वी डोंट हैव दोज काइंड ऑफ रिसोर्सेज वेयर पीपल कैन डू इट। कैन वी मेक नेचर एज आवर पार्टनर, जिससे कि हम नेचर से रिसोर्सेज यूज करके हमारी अपनी मेंटेनेंस को क्या कम कर सकते हैं, कम कितना कम कर सकते हैं, क्या हम ज़ीरो कर सकते हैं। तो उस सोच से ये वॉशरूम बना है जिसको कहते हैं जीरो एनर्जी एथिकल टॉयलेट्स। ये एक जनरल स्टैट्स है जो हमने बहुत जगह पर देखे। इट्स अबाउट हाउ द एक्सेस, स्कूल्स के अंदर कैसे वॉशरूम्स होते हैं एंड हाउ कैन वी डू व्हाट वी वांट टू डू। सो इस आइडिया को लेके वी हैड टू सॉल्व दोज 3 प्रॉब्लम्स। हाउ डिड वी डू दैट? हमने इस पर्टिकुलर स्पेस को एनर्जी एफिशिएंट और बनाने के लिए वी वांटेड टू वेंटिलेशन को पहले चैलेंज करने के लिए वी यूज्ड टर्बो वेंटिलेटर्स। एंड टर्बो वेंटिलेटर्स को इफेक्टिव करने के लिए हमने कोनिकल रूफ बनाया जिसमें स्काईलाइट्स बनाए। तो स्काईलाइट से हम सन पूरा हीटअप कर देता था। हीटअप करने से हमारे हॉट एयर राइज करते, उसके अंदर फनल के थ्रू ये बाहर निकल जाती थी। तो जो स्कूल 4 घंटे के लिए ऑपरेशनल हैं, पर ये एग्जॉस्ट फैंस जो हैं 24 घंटे चलते हैं और जितनी नेचुरल लाइट चाहिए पूरा दिन हमें नेचुरल लाइट मिलती है। और बिकॉज ऑफ इसको हम चैलेंज करने की वजह से तो मेंटेनेंस भी कम हो गई। एक पर्सपेक्टिव जो कि एक जिस तरीके से वॉशरूम होते हैं उस पर्सपेक्टिव को चेंज करने का एक प्रोजेक्ट था। तो ये सिर्फ इस जगह के लिए नहीं, इट वाज अ स्केलेबल मॉडल जिसको हम कहीं सारी जगह पर कर सकते हैं। सो कैन यू जस्ट, सो दिस इज़ हाउ द एंटायर थिंग इज़ कि जिसके अंदर नेचुरल लाइट भी है। इसको यहाँ से हम एग्जॉस्ट रूफ वेंट्स के थ्रू करते हैं एंड सो वी कुड टेक केयर ऑफ ह्यूमिडिटी, वी कुड टेक केयर ऑफ फ्रेश एयर एंड नेचुरल लाइट. So this has been something very interesting and the students really liked it. उनको बहुत पसंद आया. And whenever you walk into, you actually get that fresh air into that washroom even today, which is something is like really interesting. So this is the output finally what we could do. Simple materials, we didn't had budget for lot many expensive materials. So we just wanted even to बहुत ज़्यादा लेबर डिफरेंट कॉस्ट भी नहीं करने की जगह सिंपल कलर्स एंड सिंपल मटेरियल्स, दैट्स व्हाट. बट द ओवरऑल ब्राइटनेस ऑफ द प्लेस, हाउ द शैडो मूव्स इन, क्रिएट समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. एंड दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग पार्ट जहाँ पर बाहर के जो ट्रीज़ हैं उसको हम प्राइवेसी के साथ साथ वॉशरूम के अंदर ला सकते हैं. जैसे हम कहते हैं स्पेस बहुत कुछ हो सकता है, क्या स्पेस कोई इमोशनल चैलेंज को सॉर्ट कर सकता है? ये एक इंक्वायरी थी जिसको हमें जब ये प्रोजेक्ट कर रहे थे तब हमें इसके ऊपर सोचा था. इट वाज अ कैजुअल कॉन्वर्जेशन विद अ क्लाइंट जिसमें उन्होंने कहा था कि एक बस है हमारे पास और वो बस हमारे लिए बहुत स्पेशल है और उसको अभी हमें डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, पर वो हमारा मन नहीं है. तो हमने जब समझा कि ऐसा क्या है उस बस में, तो उन्होंने बोला कि उस बस को हमने आज से 15 साल पहले हमारी फादर की इंश्योरेंस मनी के साथ हमने ख़रीदा था. आज हमारे पास 100 बस हैं, पर जो पहला बस है आज भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. तो हमने कहा कि वो कहते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसा बना दो ताकि स्कूल में ये रह सकें. तो अब ये है कि इसको एक आफ्टर लाइफ देना था. आफ्टर लाइफ इतना सुंदर देना था बिकॉज जो एक विज़न आज जहाँ तक स्कूल पहुँची है उस विज़न को पहुँचाने के लिए जो आज से उस स्कूल में 3000 बच्चे हैं और उस स्कूल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था और उनकी 25-40 साल की जर्नी के लिए. तो कैन वी यूज़ दैट बस एज अ व्हीकल टू ट्रांसपोर्ट पीपल इन टाइम टू एक्सपीरियंस व्हाट हैज़ हैपेंड इन द लास्ट 40 years ऑफ स्कूल, जिसको हम एक म्यूज़ियम के तौर पे उस बस के अंदर इनकेस किया था. पर बस एक लैंडस्केप में क्या करेगा? वी वांटेड इट टू बी लाइक एन playful interactive object for students
to use it as a space below, above, and something even on the top. उसको हमें क्या benefit मिलता है? जो स्कूल की बड़ी बड़ी दीवारें हैं 6-6, 7-7 फुट की, और जो स्कूल जो चारों तरफ फील्ड्स के बीच में हैं, बच्चों को कभी वो देखने को नहीं मिलता कि कितने सुंदर एरिया में हमारे स्कूल है. कैन वी जस्ट लिफ्ट देम अप टू अ हाइट वेयर दे कैन विजुअलाइज what is happening around? That was the idea which we created, जिसको हम कहते हैं एक बस, एक पेविलियन, जिसको हम कहते हैं पेविलियन. So जब हम इसको कर रहे थे, सबसे बड़ा पहले यही आता है, बस तो पुराना है, कैन वी कवर इट अप? सो उस आइडिया से हमने शुरू किया था. इसको हम रैप अप करेंगे, जो सेकेंड स्केच में हमें आपको दिख रहा है. एक स्लाइड पीछे जाइए प्लीज़. तो जब हमें वहाँ से हमें लगा कि नहीं, हम इसको रैप अप करेंगे तो हम बस को कैसे सेलिब्रेट करेंगे. सो देन उसको पार्शल रैप अप करना है, थोड़ा रैप अप करना है, थोड़ा उसको स्क्यू करना है. अलग अलग चीज़ों से धीरे धीरे ये फॉर्म एवोल्यू हुआ, जहाँ पर हम बस को एक इनविटेशन की तरह किसी को भी अपने पास बुला सकते हैं. सो जो हमने पेविलियन बनाया, इट वाज एन इनविटेशन टू पुल इनटू द क्राउड. एंड ये अंदर, बिकॉज बहुत छोटी सी जगह है बस के अंदर, तो हमने कोन ऑफ विजन, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, उसके हिसाब से हमने प्लेन्स को ओरिएंट करके वी कुड सेलिब्रेट व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन द स्कूल. सो ये उस टाइम की कंस्ट्रक्शन इमेजेस हैं. हाउ एंड फॉर डूइंग दिस, yes, everybody is excited, but we had to deal with a very standard budget which they could allocate, which was comfortable for the school. And then we slowly started building it up in a metal structure and slowly start shaping it up. So this was what it was, what was available on the left, and it was what it was converted onto the right. So these were some of the construction images जिसके अंदर. सो वी वांटेड टू रिटेन, बस के अंदर जो ओरिजिनलिटी है उसको रिटेन करने के लिए द बस ड्राइवर सीट एंड द बोनेट, एवरीथिंग वाज रिटेन्ड. सो दिस इज़ हाउ द फाइनल आउटपुट इज़, जो कि इस स्कूल का ये कवर पेज इमेज बन गया. इस स्कूल के लिए बहुत, मतलब दिस हैज़ बीन वन ऑफ द वाइडली पब्लिश्ड प्रोजेक्ट्स. मतलब जो मेरे मेंटर है ग्लेन मर्केट, जब उनको मैंने अपने काम दिखाया ये प्रोजेक्ट को लेके, वो बहुत खुश थे. सो दिस वॉज समथिंग दैट, और इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि जब हम इतना कुछ सोचते हैं, जैसे हम अपनी क्लाइंट्स के लिए इतना कुछ सोचते हैं, मज़ा तब आता है जब वो क्लाइंट्स उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं. तो बहुत बार ऐसा, एक बार ऐसा हुआ कि एक दिन मेरे पास बहुत सारी फ़ोटोज़ आई जो प्रिंसिपल सर की आई. उन्होंने कहा, सर आज बस पे बारिश हुई तो वो अलग दिख रहा था, जब सुबह अलग दिख रहा था शाम को. तो उनकी बातों में इतनी एक्साइटमेंट थी. तो उस एक्साइटमेंट के अंदर जितनी हम एफर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो लगता था कि वो जस्टिफाइड था. तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को, मतलब हम सोचते हैं कि हमने ये किया, पर वो हम किसी को महसूस करा पाएँ कि ये हमने किया, और उनको उस चीज़ को रिलिश करा पाए. वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एज हम हर एक प्रोफेशनल को हम करते हैं. सो अब बात है कि क्या हम स्पेस को एडेप्टिव बना सकते हैं. तो ये चैलेंज जब आया था, इट वाज लाइक इन दिस वाज अ न्यू सेक्टर. मोहाली में सेक्टर 82 वाज अ न्यू अपकमिंग सेक्टर. दिस वाज वे बैक क्लोज टू 8-9 years बिफोर वेयर वी वर डूइंग दिस प्रोजेक्ट. एंड द आइडिया वाज, मोहाली में जो भी बिल्डिंग्स बन रहे थे, दे वर लाइक एज इफ they didn't know Chandigarh ever existed, and it was like everything else in the, जहाँ पर भी जो चीज़ बन सकता था. तो अब चैलेंज ये है कि ठीक है, एक होता है हम उसको जैसे बन रहा है बनने दें. एक होता है कि एज एन आर्किटेक्ट जब हम कहते हैं कि ये सिटी एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट से ज़्यादा डिज़ाइन किया गया, एक फ्रेंच आर्किटेक्ट से डिज़ाइन किया गया, इतनी सारी लेगेसी है, इतना कुछ है. बट इसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि लेगेसी तो थी, पर जब उन्होंने लेगेसी बनाई तब बायलॉज नहीं थे. जब उन्होंने लेगेसी बनाना छोड़ दिया तब उन्होंने बायलॉज छोड़ दिया. आज हम वो बायलॉज से डील कर रहे हैं, जहाँ पर सब कुछ प्री डिफाइंड है. हम कितना छोड़ना है, कितना हाइट बनाना है, सब कुछ बनाना है, सब कुछ प्री डिफाइंड है. और हमारे से ये एक्सपेक्ट करते हैं हम वापस वो चीज़ क्रिएट करें. अब हमारे पास ना वो मटेरियल, ना रिसोर्सेज, सब कुछ है, बट उस चीज़ को क्या हम वो स्पिरिट को सेलिब्रेट कर सकते हैं. सो दिस वाज द आइडिया विच बिहाइंड इट. कैन वी ब्रिंग बैक द स्पिरिट व्हाट वाज चंडीगढ़ वंस नोन फॉर कॉन्क्रीट एज अ मटेरियल. क्या हम वो चीज़ कर सकते हैं, बट हाउ डू वी डू इट.
because it was again in Mohali. So we wanted to do that kind of thing. What if we could sprout something in a particular area which can then breed and we can have more buildings in concrete. And today it happens. There have been quite a few designers in this area mein 4-5 buildings banane ke baad. Now people are coming with different kinds of buildings. So that kind of induction and crossbreeding is something that what we think should happen in an industry like ours. So this was what Chandigarh, what we know of. जिस टाइम पे इतने सारे जिसको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं जहाँ पर लोग it's probably first cross nominated world heritage site. French government has nominated this. And what is happening was something like this. जो कि जैसे कहीं पर भी जो चीज़ बन रहे थे वो यहाँ बन रहे थे. So the idea was, because we were working on a square plan, we had a core, we had an open space, and these buildings were made for rentals. So there were been a mixed use, multi-use that was possible. But the idea was, can we do something which was, because the building was having something, it was more towards a western side, can we have something vertical? So we were experimenting with thin concrete structures. So these are 3 inches thick concrete structures. इसके लिए हमने जब किया था 3 inches thick concrete structures के लिए, and this was built with standard shuttering, which is like ply shuttering, and standard like frame, like plate shuttering. So with that, the idea was, these were initial sketches. कि कहीं कुछ बीच में we have greenery coming in, on the top we can have greenery, and this was one of the concept sketch जिसमें we had like something which was vertically connected, something which could go horizontally, layering that was possible. And जिस जगह पर वो जो road देख रहे हैं, that is a national highway now. That was one of the main road जिसे हम मोहाली का जो outer ring road कहते हैं. So from that, this particular point was, it was at a distance where it was around 200-250 feet. So we wanted it to be strikingly visible from that point. उस जगह के लिए, so we had made our trials what size of hexagon has to be and कितने दूर से हम क्या चीज़ perceive कर सकते हैं. So that was the idea, and this was the final output. So these were the time and when the construction was happening. So the difficult part when we were doing this construction was, because we were only, our initial dream was to have something which was completely in a concrete which was untouched. So we wanted it to be like in a way that, but the biggest challenge was when we were doing it, we didn't know the output we only could get once we could do a certain level of it and then we de-shutter it. So there was a lot of challenges when we were doing it, and the biggest one was, after everything was done, we saw there was one fault which actually happened, and there was a huge fault line. So then we had to opt for grinding and then to create a texture of concrete over on top of it. But ideally, in the first instant, we wanted it to be like in the left side of it. But because of the huge fault line that was going, we had to change our ways and change our the process how we could achieve it. So this was, so we were doing it, working it from inside. So the only time where we could see what it was like was when we could do a particular floor and then we would de-shutter it. So this was, there was a small video which plays that how the plan was happening. So this is the final output, and this has been one of a very strong buildings in that region and it's become very popular. Next. And during it was a very challenging event to actually convince the client to resist the facade. And why we wanted to resist the facade was, we were dealing with low-rise commercial buildings, and the biggest challenge is to maintenance. Because when we have high-rise buildings, the only way is to maintenance is to have people coming down and cleaning it. But in low-rise, like for example, for these kind of things, the kind of rentals they get, the kind of cleaning cost is a challenge. So if you resist it, by a simple person who is working in the office can actually get the facade clean, unlike if you have to people who have to hang from outside. Thanks. So this is a take on when we were experimenting with concreting, if we could actually push our boundaries to make it more 4-dimensional, and we could like create more planes for it. So this is in a similar location, and this one of the thing what client has asked for is, there is a hotel policy coming. I want something that it could be acceptable as a hotel, and can you make something which is more modular? So, and this was the site that we was given.
So these were the initial idea, if we can make like protruding most like boxes which were in early 1930s, मतलब, which was more postmodern, like before the postmodern, like brutalist sort of a thing. तो वो चीज़ करने के लिए जो complication है, we all know that, because the first thing when I showed it to my structural consultant, he said, sir, इसका bending moment कहाँ से होएगा? How will it be sustained? How is it possible? I am unable to calculate. You create a model and then bring it to me. So we made a model, we took it to him. We said, this is what we are looking at, and it is all cantilevered, but still we want to go for it. So he took his time to actually get us a solution that what it is possible, and there were certain other things we had to connect it back to the structure. So yes, complication scares you at first, but calculated complication would be something that you can deal with, and you can actually flourish, you can nourish, and you can create that as possible. So when we created that, so we created a complication, and to optimize the complication, we made it modular. So we can use the same kind of shuttering we used for one box. We could flip it up, use for the other box, and flip it up, use for the third one. So with that, we created it. But when you look at, can you go back to the image? So this is a post not done by us. This is the post done by a contractor. And you see the people, how they were standing in all those things, and how the people on the top, they were happy creating that was. That is something what we can share it with our people who are working. So everybody works not just for money, they works for their passion, for identity, for something. So can we also nourish them to give them tasks to a point where we can actually enroll them to create something magnificent together. So as a designer, even if I visualize, I can have this in my mind, but to bring it up onto it, it is these people, these hands, we can actually bring it up. Yes, we would be challenges. So this is something which we talk about how they would like it and celebrate it. This was the output of how teamwork could bring it. Next. So these were the initial sketches, like what kind of challenges we had, how the projections were laid, and then slowly how we tried shaping it up. And it also, like, even a client needs to be more patient when we do these kind of things, because there is always an amount of uncertainty. There's always an amount of things where we can go wrong, because we are walking onto a lane where we have never walked before. But within that, there lies so much of detail and excitement that in the end, when it comes up, it becomes something like where everybody who's associated would be appreciated and would be associated with it. So this was something that was, and the biggest thing what we could achieve for the client was, we got a call after the building was made, 2-3 साल पहले बाद में, wherein like there was a person, investor from Spain, who actually liked this building, seen online. I said, I wanted to invest in India, and this is the first thing I saw, and they're really excited with. So I want to buy this building, whatever is the cost. So this was something what we could give to the client, which was like really excited about it. So this is how the play of facade is. Yeah. So this was, I just want to get to a house. So every project brings in new challenges, new kind of things that we could bring in. So here, the idea was we are making a house for a couple who was around 65 years of age. And they're going through certain health problems in their life. And at the same time, they wanted to renovate their house. So they came as a renovation, and we told them, like, what's the purpose of renovation? They said, like, we wanted a house to be presentable, we want the house to be in a certain way, and we want to build a floor above. They said, who would use it? They said, the only thing they said that, हम घर ऊपर इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि हमारा घर अच्छा दिख जाए, because अभी हमारा single level घर. So then we told them, like, कि you want to build a house which, अगर आपको घर ऐसा चाहिए, तो हम इस घर को हम ऐसे करना चाहते हैं, आपके बगल में एक पार्क है, गार्डन है, and जब आप घर बना रहे हो, like he said, this is probably the last house I'm making. Said, why don't we bring in nature to a point जहाँ पर, और I know you as a person,
And I know you are not the kind of person, जिस तरह से घर में आप रह रहे हो, you're not this kind of a person. As a person from inside, you are very different. You like nature, you like to bring in a lot of other things. Because of society, you're doing this. Why don't you just keep aside what people are saying, focus and make something which you would want to live in and which you would want to relish for rest of your life. So that was the whole idea, how it was there. It was done in one of our very stringent budgets, very simple, very clean. So this is a single level house which has 3 bedrooms as per their requirements and one single lobby where everything opens down to it. All the spaces come together. So this is the left side is, so the height, if you see it, it's a single level house, but it's actually taller than the house which is 2 stories next door. That's the kind of scale it has achieved. So from the inside, we actually have 3 different courtyards. One is leading towards the garden. The left one is, if you look at it, if you get to the plan in the next slide. So this is a very simple flow. We actually did it like boxes. So we enter, we have a foyer, we have this huge living area, and this is a site of a green belt they had, and it opens completely in the green belt. So this is, can you go back to the plan? So this is a complete that green belt. So they have a kitchen, a main bedroom for themselves, one for the mother, one for the guest, and there's a courtyard in here. So it's a very pretty simple in terms of more, and what materials are outside, they move inside. So they have the bricks which go from outside to inside. So, and everything what they want, even like we took out the redundancy in terms of, we didn't even build a staircase inside the house. We just have one for the helpers from the rear side. It's just to maximize what they just need. So this is how it opens up. So there are 3 different courtyards and we have the helper quarters. So this is the cross section of the house where we see that the light filters through the courtyard and then it flows into the house and everything gets connected on together. So जब ये घर भी बना रहे थे, तो it has the challenge was we were dealing with raw materials. We were dealing with something like concrete. So my client used to tell me it's like a test match. We used to work for 5 days just to know that do we actually got a result, or is it a right result, or it's not a right result. So we have to spend time, de-shutter it, just to see that did it right, and everything was how the modular frame where they use the shuttering plates to get it. So the bigger challenge was also to protect the materials which was finished during that construction. So the overall, this was the interior, this thing. It's a very strong architectural house. बहुत कुछ architecturally हमने किया था. And because we were working on a tight budget, we refurbished most of the furniture. हमने उसको reinterpret किया था. Furniture was mostly site built. We could reuse what they had from their collections to celebrate it. So this house was like something what we also wanted to celebrate, what we call as like modern Indian. Because what is modern Indian? Like we nowadays, like we dress like Europeans, but we don't eat like them. We would be when you're in a crowd, you could be considered to be a European, but inside you're Indian. Your food habits, everything is Indian. So what if a house could be the way that the world perceives from outside, but still be Indian, the way we want it. We want the traditional elements from the inside. So that was that thing that we brought an analogy to. So this is what we say is like when we could integrate what is in the surroundings to be celebrated part of a building. So when I was a student, I was in Japan, so I got to visit this spectacular place in Kyoto, which is called Shigakuin. Shigakuin एक बहुत beautiful emperor garden है, और वो इतना खूबसूरत है. The interesting part was not just the landscape, but how you grade the landscape with the rest of the landscape. उन्होंने forest में कुछ ऐसी plantation की थी जो आपकी curated landscape को और forest landscape को blend कर सके. तो वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग थी जिसमें आपको ये नहीं पता चलता. हम एक इंग्लिश सिस्टम में हम बाउंड्रीज बनाते थे, बट इन्होंने बाउंड्रीज को डिफ्यूज़ कर दिया ये पता चलने की कहाँ लैंडस्केप शुरू हुआ था, कहाँ ख़त्म हुआ था. तो ये जो घर है उसका पर्पस ये था कि जो क्लाइंट का विजन ये था कि उन्होंने जो ही वांटेड द हाउस टू बी
celebrated with the surrounding landscape, because ये जिस जगह पर ये plot है वहाँ से पांच अलग-अलग parks इसके पास connected है, तो उसको connect करते करते so we brought in like this was a house to inspect what is outside, तो हर जगह से बाहर दिखता है, so we had this flow of spaces, continuity है. Can we go to the next slide? So इस घर में सब कुछ transparent in terms of like, so whatever the elements were, we tried to interpret them as sculpturals. The staircase was sculptural. So we had a courtyard. And unlike many houses where they are designed from bottom to top, this was one house that was done from top to bottom. You'll get to know in a minute why it is. So this is the formal lobby area which opens onto the outside. This is the living area. Here we actually had to integrate an air conditioner into a console just to protect and safeguard heights, because in Chandigarh we were dealing with 33 feet height, and to achieve taller heights was difficult. So this was the grading in the first floor. So each bedroom opens onto their private terrace. And top you see a swimming pool, and there's an acrylic panel there. So to put an acrylic panel in a swimming pool needs a lot of resources and also needs a lot of technique, because this was flown from Thailand to put it installed. People flew in to actually install it. And there was the biggest challenge for these kind of swimming poolers. You need to install the panel first to check your waterproofing is right. Because unless and until you have a panel, you cannot test your waterproofing. So we had to leave things most like anticipatory, just to put the panel first, leave things in a way to actually get that. So this is the overall space on the terrace. So the terrace was like, the idea was, terrace is the most beautiful place to be in an urban scape, because you're high above the surroundings, you can be in middle of trees. हर चीज़ terrace पे बहुत अच्छी होती, but probably many a times those are the less used things. So the whole idea was, why don't we celebrate a terrace, 4,000 square foot of area where everything is a terrace, and is terrace के ऊपर like we have seen they had actually when they opened up, so they had a part for around 300 people and they could actually sit on top of it. It was very spectacular, like how it actually blends in after the sunset, at the sunset. So these was how we had to deal with during the construction. The water table was high, so we had to deal with those things. These were the spaces, and how like even small discussions with site becomes very important when we actually bring in. So here, the flooring pattern was actually centered around the existing trees. So we actually had to connect how the existing trees were laid out to this, to connect the entire thing. Next. So this is probably like the last two projects I'll be showing you. So this is a recent project. So here what we want to try is to say that how do we, okay, if somebody is very passionate for concrete and is a contractor for 23 years, and if he asked me to make his house, so I would want to celebrate concrete in it. So this was the idea how we could celebrate concrete and to express in its most expressive way. Like Louis Icahn said, ki if you ask a brick what it would want to be, it would say that it would answer it back, I want to be an arch. And if you ask concrete, it would say, I would want to be a granite. So here the whole idea was, how can we have an expression from concrete, which is very poetic. So this is in Sector 85. So, this was the concept, because we were trying to have in a monotony of straight lines. हमने सोचा था how can we actually bring in concrete, and this was like ribbons that was coming in. So this was it was a corner plot, and corner plot की वजह से हमें एक smoothness पूरे घर को लाने के लिए, continuity लाने के लिए, we use ribbons as it. So it was very challenging to do those ribbons, because उसके लिए form work सही से नहीं होता. We had to deal with how we could create these curves. So the plan was simple. It had 2 bedrooms on the ground floor, 2 on the first floor, just 4 people in the family. And then we had a very dramatic staircase, जो पूरे घर में जाता है. Next. So this is the final output, where we could bring in greenery and we could have this smooth flow of concrete structures that was there. So it wraps up completely right from one side to the other side.
So even these curves, how we could, so these were done in 4 to 5 inches of thick concrete shells. So this, the right side is the drawing that was given for executing it. Because as we all understand, to actually get a curve right, we need to have as many nodal points as we could. So the interesting part when we were executing this was, हमें हमेशा सारी हमने प्लास्टिक कॉन्ड्यूट पाइप से पूरे उसकी सिल्यूट्स बनाए और वो सिल्यूट्स हम साइड पे एडजस्ट करते थे टू एक्चुअली गेट द शेप राइट एंड उसके बाद उसकी फ्रेमिंग एंड उसका जो स्केलेटन बन के फिर वो कॉन्क्रीटिंग शुरू होता था. So this was the idea of staircase. So we actually wanted the staircase to be something which could not just be a staircase. Staircase को और develop करने के लिए तो हमने staircase को एक bar बनाया and we used up the staircase. This was the initial renders, how we wanted the staircase to be, and पूरा cantilevered from one side. And because we were building in concrete, ऐसा लगा था कि straight steps की जगह we could actually have curved steps, which was the possible. And even like when we were doing the beams, so we wanted the beams to edge like in the curves on the outside. So ये सारे जो curve structure है, this was done part of the shuttering where we could keep them as flowing and we could keep them around it. So this was the construction images where we could create those curves. These were the steel that was being laid, and these were the people who actually like did that, and these was the small little joys when we got during the construction. This was the way we could connect. So these were also like how the shells were created, how we could create those tolerances, how a simple structure. This was a oculus that was there in the entire structure. So slowly, step by step, we could create each one like this. Can you go back to the previous slide? So this was when we've actually found that the water table was high. So we actually wanted to make it like use the fresh air system, which is pre-cooled by geothermal technology. So in this, when the water table was there, so we used these pipes to connect them up. And then we used it, rather than as an air conditioning system, we used it as a fresh air system, which could be pre-cooled before we put in the fresh air. Next. So because like we had sustainable, so we were using double skin walls. So we used rock wool to infill because it was having a big western wall to cut the radiation. Next.